Hello friends, hope all of you are doing well. In today's session we are going to discuss a very interesting novel by Toni Morrison. This novel, The Bluest Eye, was her first novel, and basically this novel is socially acclaimed also for the fact that it challenges a very difficult aspects of society. Okay, so ये जो novel होने वाला है दोस्तों थोड़ा बहुत disturbing भी है in the nature, but in itself ये novel बहुत ज़्यादा important इसलिए भी है क्योंकि ये उन सारे एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है जो बहुत सारे लोग इग्नोर करना चाहते हैं हमारे सोसाइटी में। तो इसको पढ़ने के बाद यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ऑथर टॉनी मॉरिसन, जिनका बेसिकली नाम था क्लियो एंथनी वूफर्ड मॉरिसन, जिन्होंने बाद में अपना नाम चेंज करके टॉनी मॉरिसन रख दिया था। कि वो जो टॉपिक्स पे लिखती थी दैट वाज सो मच चैलेंजिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So before we start the novel, let us little bit know about the novelist of this novel, that is Toni Morrison. As I mentioned in the beginning of the video, her original name is Chloe Anthony Wofford Morrison, and she was known as Toni Morrison because she was not very fond of the people, and most of the people actually mispronounced her name. That's why she changed her name. She was an American novelist, essayist, book editor, and a college professor at the same time. This novel that we're going to discuss today, The Bluest Eye, happens to be our first novel and it was published in 1970. जो novel आज हम लोग discuss करने वाले हैं, जो बहुत सारे disturbing facts को it will put it into light. It was her first novel, so you can understand that the ability as a writer. All right, so Toni Morrison always focuses on some serious issues of the society. Basically this novel in itself focuses on racism. Okay, तो recently आपने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा, last year बहुत famous हुआ था और trend में भी था, Black Lives Matters. Alright, so इस 21st century में जब इतना कुछ मॉडर्न हो चुका है, हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं फॉर द ब्लैक पीपल, फॉर देयर राइट्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द सेटअप ऑफ दिस नॉवल दैट दिस बेसिकली द नॉवल सेटअप इज इन 1940s. तो तब सिचुएशन क्या हुआ होगा, ठीक है. और ये नॉवल इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉनी मॉरिसन का जन्म भी 1931 18 फरवरी को हुआ था, तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद का सेटअप है. तो a lot to know here. So here we'll also understand that the critically acclaimed Song of Solomon brought her national attention and won the National Book Critics Circle Award. All right. एंड टॉनी मॉरिसन जो है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, इस बात को आप इस बात से जान सकते हो कि शी हैज़ वॉन अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ओके, एंड अ पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन एंड मैनी मोर अवार्ड्स. विल नॉट डिस्कस अ लॉट अबाउट हर, सो दिस मच विल सफाइस. थोड़ा बहुत आप लोग को जानना इंपॉर्टेंट है अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द ऑथर, जैसे कि मैं हमेशा मैंशन करता हूँ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल. So let us talk about the characters. We'll all be discussing the central characters in this novel, especially for the exam perspective. So the main protagonist of this novel is Piccola Breedlove. She is an 11-year-old black girl who believes that she is ugly and that having blue eyes would make her beautiful. So right at the beginning, from the protagonist, we have understood that the title The Bluest Eyes has been taken in reference with Piccola Breedlove because she believed it from core that having blue eyes will give her equal status as the white people. All right, so this blue eyes is actually referring the importance of having white skin color during those times. All right, because black people were considered as inferior as compared to white people. So Piccola obviously was a black girl and very young girl, actually 11-year-old, and right from the beginning she understood that how the black people suffered in the hands of white people. So next we have Claudia McTeer. She is very important because she is the narrator of most of the parts of the novel, and she is an independent and strong-minded 9-year-old girl, and she despises everything that is related to white people. So she knows the exact situation, the exact scenario, that how the black people are marginalized and they are deprived of the basic necessity things, and it is all because of the social gap between the white and the black during that time. Okay, so she despises everything that is white. All right, so next we have Collie Breedlove. All right, Collie Breedlove is also very important because he happens to be the father of our protagonist, that is Piccola Breedlove. So he is basically a impulsive and a very violent person in a very dangerous way. All right, so we'll talk about him in more in details in the novel.
So just a basic introduction about him is that he has suffered a lot while he was very young and he was humiliated, and so he finds always finds a way to take out his frustration on rest of the people. All right, and it happens to be his family only, and we'll see that how the main protagonist suffers at the hand of his own father. All right, moving on. Now we have the mother of Piccola, that is Pauline Breadlove, or we will call her Polly, as she is a house taker in a white family. All right, so she is very fondly called as Polly there, and she is a person who believes that she is ugly, and she is not that conscious about her children, and she is mostly, into herself. All right, she thinks that she is a martyr. She is not a martyr, like she has done enough for her family and now she needs to focus on herself. Then we have Frida McTeer. Frida McTeer is again the sister of the narrator of this novel, that is Claudia. All right. So Frida again shares some views as Piccola. She is 10-year old who shares Claudia's independence and stubbornness. And Frida, she is very fond and a very good friend of Piccola as well. All right. Next we have Mrs. McTeer and Mr. McTeer. Now both of them are the parents of Claudia and Frida McTeer, and they happen to be the most responsible and caring parents. Claudia's mother, basically Mrs. McTeer, and is an authoritarian and sometimes callous woman who nonetheless steadfastly loves and protects her children. Now here you will understand that she is quite different from Pauline. Pauline Breadlove, who happens to be the mother of the central protagonist of the novel, that is Piccola. In the other case, we see that Pauline is very indifferent and insensitive towards her children, and here Mrs. McTeer and Mr. McTeer, both of them actually love and care about the children a lot. Mr. McTeer also happens to be, a very hardworking person who works very hard to keep the family fed and clothed. He is fiercely protective of his daughters. So both of the person are exactly the opposite of the parents of Piccola Breadlove, and this Mr. and Mrs. McTeer also happens to be the foster parents of Piccola for a certain period of time in the novel. Next, we have another antagonist after Collie Breadlove, that is Henry Washington. So this person is actually staying in a rented place under the supervision of Mr. and Mrs. McTeer, but he is a very lecherous person, but he never discloses his that side, and he has a ये जो बंदा है हेनरी वॉशिंगटन, ये कहाँ पे रहता है, मिस्टर एंड मिसेस मैकटेयर के घर पे ही रहता है एज ए रेंटेड पर्सन, और बहुत चुपचाप रहता है. एंड द गर्ल्स क्लॉडिया एंड फ्रेडा वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, बट ये जो आदमी है इसका एक नेगेटिव साइड भी है, एक बहुत लेचरस साइड है, इसका गंदी नज़र होता है दोनों लड़कियों के ऊपर. ठीक है. Then we have Sammy Breadlove. Okay, Sammy Breadlove is again Piccola's brother. He is a 14-year-old brother of Piccola who copes with his family's problems by running away from home. Okay, now here we see that Piccola का एक भाई भी है, एक बड़ा भाई है, and he happens to be the also the sufferer of the family disputes. दैट मीन्स जो ब्रेडलव का जो फैमिली होता है उसमें आए दिन झगड़े होते रहते हैं. ऐसा कोई भी दिन नहीं निकलता जिस दिन ब्रेडलव के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो झगड़ते नहीं है. ठीक है. तो सैमी इसको कैसे डील करता है, सैमी जब भी ऐसा झगड़ा होता है तो वो घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन ये एक्चुअली पिकोला नहीं कर पाती. पिकोला को वो झगड़ा जो होता है वो देखना पड़ता है, एंड शी इज अ विक्टिम इन सम और अदर वे. ऑलराइट. Okay, for the sake of the novel, I'll just wrap up the character list with the next two characters. The last second is Soaphead Church. Okay, so this person is a light-skinned West Indian misanthrope and a self-declared reader, advisor and interpreter of dreams. This person hates all kinds of human touch with the exception of the bodies of young girls. So आप देख सकते हो ये कैसा टाइप का एक रिलीजियस हिपोक्रेट है. ठीक है. इसको ह्यूमन टच एकदम पसंद नहीं है एक्सेप्ट फॉर द बॉडीज ऑफ यंग गर्ल्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्सन सोपहेड चर्च, जिसके नाम पे तो चर्च है लेकिन इसके जो बिहेवियर है उसको किसी भी तरह से रिलीजियस नहीं बोल सकते आप. और ये एक फेल एडवाइजर है, एक फेल रीडर है. ठीक है. फेल्ड प्रीचर भी है. और जो आखिरी कैरेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन भी नॉवल में काफ़ी मिनिमल है, दैट इज आंट जिमी.
this elderly woman has raised Collie. She is affectionate but physically in decay. Now मैंने इस कैरेक्टर को क्यों मेंशन किया है, बिकॉज आपको कॉली जो है कॉली ब्रेडलव जिसको मैंने बताया था कि द फर्स्ट एंटागनिस्ट ऑफ दिस एंटायर नॉवल, उसका जो मेंटल स्टेट है उसको समझने के लिए आपको उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, जो मैं डिस्कस करूंगा ऑब्वियसली एज द वीडियो प्रोग्रेसेस. He was discarded by his family basically, okay, the Collie Breedlove, and he was raised by Aunt Jimmy. So the novel setup is kept in 1940s, right after the Great Depression, as I mentioned in the beginning, and the place where the entire novel has been picturized is Lorain, Ohio. So Ohio is the same place from where our author comes from. Here we see the family of McTears. नाउ मिस्टर एंड मिसेस मैक्टियर्स के बारे में मैंने बिगिनिंग में भी जब कैरेक्टर लिस्ट में मैं समझा रहा था, मैं आपको बता चुका हूँ. दे आर वेरी केयरिंग पीपल, दे लव एंड अडोर देयर डॉटर्स. एट द सेम टाइम मिसेस मैक्टियर इज ऑल्सो वेरी अथॉरिटियन, दैट मीन्स शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. And here we see certain other characters as well. We see the character of Henry Washington, all right, who lives with the McTears as a rented person, all right, because बहुत difficult time tha after Great Depression and people were jobless, and Mr. McTear had to work really hard to keep his family fed, all right. So his family had two daughters, that is Claudia and Frida. Now I've said in the beginning that Claudia happens to be the character who despised all the white people, okay, everything that is related, even the white color she despised, she didn't like it, and she is also the narrator of most of the part of the novel. Okay, so the novel has been said in a first person narrative standard, and the character that is Frida, her sister, is quite attracted to the white people stuffs. She adored them in certain way, okay, she admires them. Okay, so here we see that the McTears take Piccola in their home as their foster daughter. अब यहाँ पे क्या होता है, स्टोरी में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है. मैक्टियर का फैमिली मैंने आपको समझा दिया है. मिस्टर एंड मिसेस मैक्टियर रहते हैं लोरेन, ओहियो में अपने दो बेटियों के साथ, और उनके साथ कौन रहता है, हेनरी वॉशिंगटन. अब ये हेनरी वॉशिंगटन वही है जो इनके घर में किराए में रहता है, लेकिन इसका एक बहुत लेचरस साइड है, मतलब इसका नज़र होता है दोनों लड़कियों पे. बट बोथ ऑफ द गर्ल्स वेर रियली अनअवेयर ऑफ द इंटेंशंस एंड दे वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पर्सन हेनरी वॉशिंगटन, ऑलराइट. सो जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो दिखाया जाता है कि पिकोला जो होती है वो इनके घर में रहने के लिए आती है. वाई? बिकॉज ऑफ फादर कॉली जिसके बारे में बताया था, कॉली ब्रेडलव हैज बर्न डाउन देयर हाउस. शराब के नशे में आके अपना पूरा घर ही जला डाला, ठीक है. तो क्या होता है, पिकोला जो होती है वो मैक्टियर्स के साथ रहने आ जाती है. सो इन अ मैटर ऑफ टाइम क्या होता है, क्लॉडिया एंड फ्रीडा जो होती है दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स विथ पिकोला. ऑल्सो फॉर वन रीजन दैट क्लॉडिया एंड फ्रीडा फील रियली सॉरी फॉर हर, because Piccola has suffered her entire life in the hands of her parents. Okay, so she has been a victim her entire life. So here we see that Piccola really loves Shirley Temple, because ये जो एक टेम्पल होता है जो पूरा वाइट कलर का होता है, एंड शी बिलीव्स दैट वाइटनेस इज ब्यूटीफुल एंड दैट शी इज अगली. ऑलराइट, ये पर्सपेक्टिव जो होता है, ये पर्सपेक्टिव उसके माँ से ही उसको मिला होता है, क्योंकि उसकी माँ जो होती है पॉलिन और पॉली, वो भी ऐसा ही सोचती है कि दैट शी इज़ वेरी अगली बिकॉज शी इज़ ऑफ ब्लैक कलर एंड हर स्किन कलर इज़ ब्लैक. दैट्स वाई यही जो सोच है वो अपने बच्चों पे भी पास ऑन कर देती है, ठीक है. सो पिकोला मूव्स बैक इन विथ हर फैमिली एंड हर लाइफ इज़ डिफिकल्ट. तो उनका घर का जब रिनोवेशन हो जाता है, वापस जब घर बन जाता है, तब वो वापस क्या होता है, मैक्टियर्स को छोड़ के चली जाती है. तो उसके बाद उसका लाइफ और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज उसका फादर जो है ही इज़ एल्कोहलिक, और उसकी मम्मी जो है वो keeps very distant. Okay, as I've told you in the beginning while discussing the character list, that her mother is mostly busy with herself only, because she thinks that she is a martyr in some way or the other. Also घर का situation बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, because both of them fight most of the time. Okay, her brother सैमी frequently runs away. So जब भी झगड़ा होता है सैमी क्या करता है, वो भाग के चला जाता है. लेकिन पिकोला ऐसा नहीं कर सकती, बिकॉज वो टाइम था 1940s का टाइम, वहाँ पे लड़कियों को वैसे भी इंडिपेंडेंस थोड़ा कम मिलता था. उसके ऊपर से जब आप एक ब्लैक स्किन कलर की लड़की हो, यू कैन अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग, हाउ शी हैज़ टू सफ़र बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, because of her family, because of the circumstances. Alright, so things are very difficult for Piccola. Piccola believes that if she had blue eyes,
she would be loved and her life would be transformed. Now this is the central point of this entire novel that you need to understand. पिकोला जो है उसको ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ द ग्रेट सफरिंग्स दैट शी हैड, शी बिलीव्स दैट अगर उसके आंखें ब्लू कलर की होती देन हर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड. ओके, शी विल बी रिस्पेक्टेड, शी विल बी लव्ड एंड शी विल बी केयर्ड. सो यहाँ पे आपको ये बात भी समझना है कि बाय ब्लू कलर शी मीन्स in some way or the other the white skin color of the white people. All right, so here the depiction of the, the various privileges that the white people has been depicted by Blue Eyes. Meanwhile, she continually receives confirmation of her own sense of ugliness. तो उसको वो खुद कन्विंस्ड थी, शी वॉज सेल्फ कन्विंस्ड दैट शी इज अ वेरी अगली गर्ल. यहाँ पे क्या होता है, दैट स्टोरी टेक्स ए बिग टर्न नाउ. Now the readers are given a hint, an idea that why the Piccola's parents, basically Pauline and Collie, are so much disturbed and difficult to live with. Alright, so Pauline से शुरू करते हैं. Pauline जो होती है उसका एक पैर थोड़ा डिफेक्टिव होता है and she always felt isolated her entire life. तो वो क्या करती है, she always kept herself busy in movies and all rather than giving importance or raising her children. और यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि हर एंटायर लाइफ शी हैज़ फेल्ट दैट शी इज़ अगली एंड द रोमांटिक लव है इट्स रिजर्व्ड ओनली फॉर द ब्यूटीफुल पीपल. एंड बाय ब्यूटीफुल पीपल शी मीन्स द वाइट पीपल. दैट मीन्स काले लोगों के लिए प्यार नहीं होता. ऑलराइट, अब बात करते हैं पिकोला के फादर के बारे में, दैट इज कॉली. नाउ ये जो बंदा है द मेन एंटेगनिस्ट, अब इसको एंटेगनिस्ट भी बोल नहीं सकते बिकॉज ही हैज़ ऑल्सो बीन ए विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेज, बट दैट डज नॉट रीडिफाइंस हिज एक्शंस. ठीक है, अब ये जो आदमी है कॉली, ही इज़ ऑल्सो ए ब्लैक पर्सन ऑफ कोर्स and he has also suffered a lot when he was young. He was abandoned by his mother and father and he was raised by his great aunt who also died when he was a young teenager. Now इस बंदे के लाइफ में तब टर्निंग पॉइंट आता है when he was humiliated by two white men who found him having sex for the first time and made him continue while they watched. So इससे हम लोग को पता चलता है कि this person has suffered a lot in the hands of white people and ये जो humiliation जो उसके अंदर रह गया है that transformed into anger. Alright, ये जो frustration that kept on increasing inside the person's head was inflicted on his family, especially on Piccola and her mother. Because Piccola का जो भाई था सैमी, वो तो घर से चला जाता था जब भी झगड़ा होता था, तो सफ़र किससे करना पड़ता था, पॉलिन और पिकोला. एंड प्राइमरली पिकोला ज़्यादा सफ़र करती थी बिकॉज शी वॉज ए वेरी यंग गर्ल, शी वॉज ए टीनेजर. पॉलिन जो होती है वो उसका आदत हो जाता है उस पिकोला की माँ का कि झगड़ा एंड ऑल, वो भी झगड़ा करती है, तो शी इज़ लाइक क्वाइट एक्विंटेड विथ इट. सो ये जो आदमी है ही फील्स ट्रैप्ड इन हिज मैरिज एंड हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन हिज लाइफ. नाउ द नॉवल मूव्स टू द मोस्ट डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी. क्या होता है कि एक दिन जब कोली घर वापस आता है, ही फाइंड्स पिकोला वॉशिंग डिशेस. नाउ विथ mixed motives of tenderness and hatred that are fueled by guilt, he rapes her. Okay, Collie rapes her own daughter. So when Piccola's mother finds her unconscious on the floor, she disbelieves Piccola's story and beats her. ठीक है, उसकी अपनी जो माँ होती है, she didn't believe Piccola's story that her father raped her and उल्टा उसको ही मारने लगती है. Piccola क्या होती है कि she was very disheartened by this entire incident and she goes outside and meets a person that is called as Soaphead Church. जैसे मैंने पहले बताया था, ये आदमी बेसिकली एक कॉन आर्टिस्ट भी बोल सकते हो इसको. इज a failed preacher, a sham mystic. Okay, everything that he does or says is sham. But Piccola out of a innocence उस आदमी को बोलती है कि क्या आप मुझे blue eyes दे सकते हो. Okay, helplessness, because she was very helpless. The last thing that she wants now is blue eyes, because now she thinks that if she has blue eyes everything will again be good in her life. So instead of helping her, ये बंदा जो है Soaphead Church क्या करता है, ये एक कुत्ते को मरवा देता है इसके हाथ से, पिकोला के हाथ से. क्या करता है कि एक कुछ खाने का सामान देता है, वो बोलता है कि इस कुत्ते को दे दो, अगर कुत्ते ने मतलब कुछ वीर्ड तरीका या स्ट्रेंज तरीके से बिहेव किया देन यू अंडरस्टैंड दैट यू विल हैव योर ब्लू आइज.
जबकि होता ऐसा है कि जब पिकोला खाने का सामान डॉग को देती है, कुत्ते को देती है, तो कुत्ता वहीं पे मर जाता है. ऑलराइट. Now, what happens by the end of the novel is that Piccola becomes pregnant. All right, she is impregnated by her own father. एंड यहाँ पे क्या होता है कि जो पूरा सोसाइटी है, आप सोच सकते हो एक अगर टीनेज लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, देन हाउ द एंटायर सोसाइटी विल फील अबाउट दैट गर्ल. द एंटायर ब्लेम वाज पुट ऑन हर एंड द एंटायर सोसाइटी वांटेड दैट शी अबॉर्ट्स दैट बेबी और द बेबी डाइज. ऑलराइट, यहाँ पे सिर्फ क्लॉडिया और फ्रीडा ही होती है जो चाहती हैं कि पिकोला के जो बच्चा है, जो अनबॉर्न बेबी है, दैट लिव्स. What they do, they have been saving a money, pocket money, in order to buy a bicycle. तो वो क्या करती है, बाइसाइकिल नहीं खरीद के वो कुछ मैरीगोल्ड के सीड्स खरीद लेती हैं जिसको वो प्लांट करती हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर उस मैरीगोल्ड प्लांट में फूल आए तो the baby will live. So they basically pray for the baby of Piccola. They believe that if the flowers live, so will Piccola's baby. So eventually क्या होता है, the flowers refuse to bloom and Piccola's baby dies when it is born prematurely. Piccola की जो बेबी है, so that baby also dies and flowers भी bloom नहीं होते हैं मैरीगोल्ड के जो seeds बोए थे क्लॉडिया एंड फ्रीडा ने. कॉली का क्या होता है, कॉली जो फादर ऑफ पिकोला है, हु रेप्स पिकोला फॉर अ सेकंड टाइम, ही देन रन्स अवे. ऑलराइट, एंड ही डाइज इन अ वर्कशॉप. Piccola goes mad. Now this person, the central protagonist, has suffered to a abdominal extent. ऐसी एक लड़की जो बचपन से देखती आ रही है that she has been a victim of her parents fighting, she has been raped, she has been sexually abused, she has been a victim her entire life. So she goes mad at the end of the novel, believing that her cherished wish has been fulfilled and she has the bluest eyes. Now by the end of the novel क्या होता है, जब उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है पिकोला का, वो खुद के आसपास एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेती है और ये सोचने लगती है कि अभी उसको मतलब ब्लू आइज मिल गए हैं फाइनली. ओके, दैट्स ओनली इन दैट्स अ फिगमेंट ऑफ अ इमेजिनेशन. ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो ऐसा सोचने लगती है क्योंकि उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है. एंड दैट इज हाउ दिस नोवेल एंड्स. All right, on a very sad note, that Piccola goes mad and the collie, the person who rapes her, eventually dies. So as I have said in the beginning, guys, this novel is very disturbing and very heart-wrenching because of lot of facts. अब कुछ facts मैं आपको बता देता हूँ इस novel का. जैसे कि इस novel जब publish हुआ था 1970 में, तो बहुत सारे schools and colleges में इसको बैन कर दिया था because of its explicit content, because of the incest stories and the child abuse, alright, the rapes and the violence that was portrayed in this novel. But एक बात जो आपको मानना पड़ेगा, that this person, the author of this entire novel, she has taken a challenging task. Okay, Toni Morrison का यही एक quality है that gets a lot of appreciation, that she has the ability to tap on the societal norms of that means the bad societal norms I'm talking about. All right, so in 60s में भी लोग बहुत challenging 1960s में भी लोग जो मेल ऑथर्स थे बहुत सारे challenging topics पे लिखते थे, लेकिन कोई सब का जो stories होता था that ends on a good note. All right, so Toni Morrison happens to be the African American author who took up this challenge and portrayed some of the negative aspects of the society. So चलिए फटाफट बात कर लेते हैं about the themes of this novel. Obviously by the end of this novel you have understood that the central theme of this novel is racism. Alright, so racism, what is racism? We all know about racism, but if it is asked in exam from this novel perspective, you have to answer. Here racism means the difference, the discriminatory behavior or the attitude that the black people has to face because of their skin color. Alright, the privileges that the white people had because of their color and which was considered to be superior. So this is what racism is. Alright, then we have certain other themes as well, like we have child violence, like atrocities and discrimination against women. Okay, we have like a lot of violence. So a lot of other sub themes are also there, but understand that the central theme of this entire novel is racism. So this is the end of the video, guys. I hope that you have understood the basic plot summary of the novel The Bluest Eye by Toni Morrison. In case if you have any other doubts regarding this novel or any other question related to this novel,
Do feel free to comment below. This novel has basically been included in the MAG 7 paper of your MAG syllabus. In case if you have taken this paper, let me tell you that I'll be covering this paper entirely before the December term and examination. And before I end this video, I would like to quote a very popular dialogue of the series Kota Factory of Maheshwari sir. That is, टॉपर्स कभी लेट शुरुआत नहीं करते और आप लोग ऑलरेडी एक साल लेट हो. अब इसमें आप बोलोगे सर हमको टॉप नहीं करना है, बस वी हैव टू गेट सम डिसेंट मार्क्स इन द एग्जाम. यहाँ पे बात ये नहीं है दोस्तों. वी हैव आवर एग्जाम्स इन दिसंबर एंड डेट्स ऑब्वियसली अभी तक निकले नहीं है, बट वी आर काउंटिंग दैट दिसंबर को ही होगा एंड वी हैव रफली 2 months इन आवर हैंड. इट्स ऑलरेडी लेट. तो जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया है और आपने ये MAG 7 पेपर अमेरिकन लिटरेचर ले रखा है अपने सेकेंड ईयर में, तो you people can prepare along with me. I have already uploaded a couple of videos of the previous year question paper. 2015 तक मैं सारे question papers upload कर दूंगा चैनल पे. Do download those videos or you can watch it or you can save those videos as well. और काइंडली क्वेश्चन पेपर्स भी स्टडी कर लीजिए बिकॉज लास्ट 2 साल में आई गेस कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इस टॉपिक से, बट इससे पहले पूछा गया है. तो दैट मेक्स दिस टॉपिक, दिस नॉवल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम. ओके, इट्स क्वाइट सर्टेन दैट इससे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं. Do prepare for it thoroughly. Hope this video helps and do let me know if there is any other doubt regarding this novel. I'll meet you again with a different video on the same subject, MAG 7 American Literature. Till then, God bless you and thank you all.